Papermaking has been the heart of this Indian town's economy for at least 5 centuries. And a lot of the work is done by hand, one sheet at a time. This factory can make 10,000 sheets in just a day. But in a modern world full of automated paper mills, how is a 500-year-old industry still standing? The work at Kalpana Handmade Papers in Sanganer starts with waste. The workshop recycles scraps from garment factories that would otherwise be thrown away. Nimi Chand Saini is the owner and oversees every step of the process. इसमें जो दिख रहा है आपको ये छलनी है, इसमें कोई मिट्टी के कण हो या इसमें कोई कचरा हो तो कचरा हम निकाल रहे हैं इससे. Bigger pieces go through this shredding machine. Within seconds, a pile of pulverized fabric comes out the other end. Workers dump over 200 pounds of shredded fabric and paper into this tank. One batch takes 1,500 liters of water. The mixing used to be done entirely by hand, which took triple the amount of time as it does today. Now, the machine can churn out pulp in under 2 hours. Then, it's time for the most crucial step, turning the pulp into paper. This skill requires years of training. इसी का जो सबसे मेन ये चीज़ सीखे हुए कारीगर होते हैं, उनको सिखाया जाता है. सिखाने के बाद में ही कर पाते हैं ये. नहीं ये जो है बिल्कुल इनको हर आदमी के लिए मुश्किल है. It takes 2 people to spread the pulp evenly onto the sieve. The amount varies depending on how thick the paper will be. सबसे बड़ा मुश्किल काम यही है, इसको जो बिल्कुल अपने स्ट्रेट रखना. ये पर सीट वेट के हिसाब से होती है, तो इस पल्प के नाप से ये डाल रहे हैं अकॉर्डिंग उसके कि जितनी थिकनेस हमको चाहिए. A piece of cloth goes on top of the pulp so that the sheets don't stick together. For specialty paper, workers add extra decorations, like these rose petals. They do this 1,000 times until the batch is complete. Then, the stack goes into the hydraulic press. पहले सर इस पे क्या होता था कि हम इसके ऊपर कुछ लकड़ी का फंटा लगा करके इस पे कुछ वेट रख करके और उस फिर पानी निकालने के बाद में फिर क्या होता था कि इसको हम दीवारों को चिपका के पेपर को. Now they use heavy machinery to press the stack and send it to the upper level where there's sunlight. They remove each piece of cloth one by one, so it can be reused in another batch. ये फट करके खराब नहीं हो जाएगा, तब तक हम इसको यूज करते रहेंगे. The sheets hang out to dry for 2 days. Then a machine called a calendar smooths out each piece. ये चद्दर है लोहे की, इसके बीच में ये दोनों रोल के बीच में जाएगा मशीन में. Workers say that the paper's texture changes drastically after this process. Finally, with the help of a giant paper cutter, the worker slices stacks of paper down to size. The scraps will make their way back into the process from the beginning. Paper-making communities called Khagsis came to India around the 16th century and eventually settled in the town of Sanganer. A nearby river made it the perfect place for making paper. But when the British came to power in the 1800s, they started importing paper from mills abroad. The local workshops that made paper by hand couldn't compete, and many closed down. Mahatma Gandhi stepped in during the 1940s during his fight for Indian independence. He advocated for local handicrafts and is credited today with saving the handmade paper industry. Even though this factory's process has modernized with some machines, the sheet-by-sheet technique sets it apart from most mass-produced paper. हाथ से जो बनाया वो पेपर है, उसमें एक अलग लुकिंग, अलग उसकी जो एक डिज़ाइन उस पेपर की एक अलग ही देखने को मिलती है, जो कि मिल मेड से अलग हट करके है. They ship all over the world and use the paper to make hundreds of different products. About 40 employees design things like calendars, jewelry boxes. तो आप इस बॉक्स को जैसे देखेंगे तो इसमें जो बाहर हम कार्डबोर्ड यूज़ कर रहे हैं वो दैट इज़ अ रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड, और अंदर जो आप पेपर देख रहे हैं इट इज़ अ हैंडमेड पेपर. And ornaments. क्रिसमस ट्री पे जैसे डेकोरेट करें तो ये पूरा इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है. The workers here take pride in their craft. सबसे बड़ी बात यह है कि एक ये वेस्ट चीज़ से हम इस पेपर को तैयार कर रहे हैं. कोई बहुत हमको गर्व महसूस होता है
कि हम अपने हाथ से जो है कि एक हाथ की कोई चीज़ बना करके और हम उसको मार्केट में उतार रहे हैं। And as long as people need paper, Nimi is confident his business will thrive. हैंडमेड पेपर की जो हाथ से बनाई हुई चीज़ है और इसकी लुकिंग जो है वो एक अलग पहचान है, इस वजह से इसको रखना चाहते हैं। इसकी डिमांड है मार्केट में। इसका बहुत ही अच्छा ब्राइट फ्यूचर है। ये एक हर आदमी की यूज़ की एक चीज़ है।